Before we move along, somebody asked in the group yesterday, Telegram group पर, that how to make synopsis notes, short notes for every lecture. ठीक है? तो I'll walk you through the process, the mental process that must be applied for this note making. ठीक है? So first thing, you go back home. What is the first piece of material that you should pick up? The PYQ booklet. ठीक है? What should you do with this PYQ booklet? क्या करना चाहिए? Should you cover all the questions from that unit, or specifically those questions which are covering those themes which are covered in that day's class? Specifically those questions that are pertaining to that day's class. Focus on those questions pertinent to today's class. Second thing, what to emphasize upon when you are reading these questions? Should you start brainstorming various arguments, try to recall facts from the class, या फिर कुछ और चीज पे फोकस होना चाहिए यहाँ पर? Only one thing, that is highlight the key demands of these questions so that in your mind you are preparing a demand tree, a demand chart. ठीक है? तो analyze the PYQs to prepare a mind map populated by the key demands of these questions. So through these two steps, what you're actually doing is applying the PYQ lens to your analysis. एक बार PYQ का चश्मा पहन लिया है, अब उस चश्मे के थ्रू क्या पढ़ना है आपको? The notes, the class notes, handouts, etc. that you need to go through. ठीक है? Now, through this lens, revise today's topics, and while you are doing it, तो आपको emphasize किस चीज पे करना चाहिए? Should you be focusing on the facts or more on arguments which will help you in fulfilling the key demands? Arguments, ठीक है? फैक्ट्स यस दे आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट क्योंकि उनका एक वैलिडेटिंग वैल्यू होता है. जो भी आप क्लेम कर रहे हैं, जो भी आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, यू हैव टू, यू कैन से बैक इट अप विद सर्टेन फैक्ट्स, बट first focus, primary focus should be on arguments. Facts, the same kinds of facts that you are reading today, na, you will be encountering similar facts throughout the course of ancient India. So you will be getting to touch base with these facts again and again and again. So if you have a complete grasp over the arguments, you will be able to make do with these facts. ठीक है? तो focus on arguments rather than facts. ठीक है? Further, another key area of focus should be the core concepts, key insights and critical notes that are present in your handouts, because वहां पे कुछ हिस्ट्री ऑप्शन से रिलेटेड स्पेसिफिक वोकैबुलरी यूज किया गया है. फॉर एग्जांपल, एडवर्ड सईड्स थ्योरी ऑफ ओरिएंटलिज्म, और मे बी यान आस्कमैन्स आइडिया ऑफ कल्चरल मेमोरी, एटसेट्रा. तो
if you are able to get a hold of these things now, you will be able to utilize them well in your answer writing, and nobody else is teaching like this. Other people don't have access to this vocabulary, so do make use of this. Okay, so focus upon, additionally, focus upon key concepts, insights, and critical notes, highlighting the specific vocabulary that can be useful for आंसर राइटिंग. ठीक है, तो वंस यू हैव हाईलाइटेड ऑल दीज थिंग्स, उसके बाद क्या करना है, देन यू नीड टू सिट डाउन विद अ पीस ऑफ पेपर. तो मान लीजिए कल हमने टोटल, आई थिंक वी वेंट ओवर मटेरियल ऑफ रफली 10-12 पेजेस ना. तो you need to be able to compress all of that within one page. But do you think that in one page you are going to get all the detail that is present in all those things? नहीं, on all those pages वो नहीं मिल पाएगा. तो आपको लिखना क्या चीज है यहाँ पर, आपको यू नीड टू टेक अ लुक एट द हेडिंग्स, जो इंडेक्स है, राइट. इंडेक्स इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ की. तो आपके माइंड में एक माइंड मैप बनना चाहिए कि इसके इस टॉपिक में, इस थीम के अंदर, इस हेडिंग के अंदर ये मैंने पढ़ा था. एंड you simply need one or two phrases to unlock that memory so that you can recall the entire thing. ठीक है, तो next you need to make a, let us say, mind map or index or skeletal framework of the notes, of the handouts, class notes, etc., highlighting or emphasizing upon the aspects mentioned above. Those arguments, ठीक है, that vocabulary, these things should be present in your notes. And जो हमने टेबल ऑफ कंटेंट्स में हेडिंग्स यूज करी हुई हैं, वो आपके शॉर्ट नोट्स में भी होनी चाहिए, सो दैट योर शॉर्ट नोट्स आर एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ योर हैंडआउट्स और क्लास नोट्स, ताकि उसमें वो सारी चीजें आपको मिल जाएं जो कि आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट होंगी. ठीक है, तो हाईलाइटिंग द की एस्पेक्ट्स मेंशन्ड अबव. ठीक है, तो ये काम करने के लिए अभी आज के स्टेज में यू मे टेक एज मच एज 1.5-2 hours. डोंट बी कंसर्न्ड अबाउट दिस. इसकी भी आपको प्रैक्टिस लगेगी. दिस टाइम इज गोइंग टू कम डाउन अल्टीमेटली. व्हाट शुड योर शॉर्ट नोट्स नॉट बी, क्या नहीं होने चाहिए? It should not be simple compressed précis or cataloging of facts, right? It should have a particular sense. There should be a logic behind making this. क्योंकि आपको अगर कंप्रेस करना है, वो तो कोई बंदर भी कर सकता है, राइट? वो काम आपको नहीं करना. वो तो आप चैट जीपीटी को भी दे दोगे तो वो 41 पेज के नोट को 5 पेजेस में करके दे देगा. यू मे ऑल्सो फील कि हाँ मेरा काम हो गया, आई डोंट नीड टू पुट इन दैट एडिशनल 1.5-2 hours. बट that is where you are going to lose out. क्यों? Because that is the additional amount of time you are focusing specifically on the subject. बाकी लोग जो नहीं कर रहे होंगे, they are going to lose out on that. Clear है? तो it is important for you to make notes. इस तरह के short notes भी बनाने चाहिए, but short notes which should be useful for you in the future. अल्टीमेटली आपके पास, आप एक एक स्टेज पे ऐसा पहुंचोगे कि मान लीजिए कि एंशिएंट इंडिया के हमारे पास 500 पेजेस के नोट्स हो गए.
Do you think it is realistically possible for you to revise the entire thing in one night? वो नहीं हो पाएगा. So you need something more manageable. 40-50 pages max इतना हो जाना चाहिए आपके पास. This is going to help you in doing that. This does not mean that while you are preparing these notes, you should not revise your class notes or not revise your handouts. उनको revise करते रहो so that they remain relatively fresh in your mind. ताकि आप उस स्टेज पे पहुंच सको that you don't actually need those bulky notes. These notes are going to be sufficient in unlocking those memories. उनको retrieve करके लाने में, in highlighting, in refreshing those key concepts, that vocabulary, those arguments, those debates, वो आपको यहाँ पे याद हो पाए. ठीक है. अच्छा, vocabulary में it is also going to include historiography also. ठीक है. Specific historiography as well as vocabulary that can be useful. समझ में आया है इतना? अच्छा.